प्रगति फाउंडेशन ही संस्था सामाजिक, आरोग्य तथा शैक्षणिक उपक्रम में सहभागी होती है। महाराष्ट्र भर में बहुत सारे उपक्रम संस्थाओं के तरफ से कंडक्ट किए जाते हैं। आईटीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एक 30 ईयर ओल्ड एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे आईटीएम के हेल्थ रिलेटेड कोर्सेस, होटल मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेस, मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेस और इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेस की ट्रेनिंग दी जाती है। आपको आपके जीवन में अगर शुरुआत करना है, तो ऐसे माना जाता है कि 2 पड़ाव मुख्य होते हैं। एक जो एसएससी कहलाता है और उसके बाद एचएससी। एचएससी का बेस एसएससी होता है। हमें अगर हमारे करियर की शुरुआत करनी है, तो हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है। और आज के इस वेबिनार में ही हम हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कैसे कर पाएँगे, एसएससी और एचएससी के बाद कौन-सा करियर ऑप्शन हमें लेना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के मेन स्पीकर प्रोफेसर आरएसएस मणि सर। मैं आज की इस वेबिनार की शुरुआत करता हूं और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम आई इनवाइट प्रोफेसर आरएसएस मणि सर। वेलकम सर। Thank you, Kiran. Thank you for that warm introduction and good morning, everybody. Namaskar. Welcome to this career webinar where we are trying to answer this very important question. What next after 10th? What next after 12th? जैसा काफी लोग जानते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बाद बच्चे स्कूल से कॉलेज में जाते हैं and after 12th you move from junior college to degree college. These are very, very important steps in your career. I'm glad that some parents are also attending this webinar because I've always believed career choice जो होती है वो एक family का decision होता है. It is not only the individual who decides, it is the individual and the family who decide about the career of the children. तो ये बहुत ज़रूरी है that हमको इस तरह से करियर प्लानिंग करनी है that students and parents can decide what can be the next steps towards building the career. The first important thing to realize is after 10th standard, you get a choice. Should I continue in science? Should I do commerce? Or should I do humanities? The other word for humanities is arts. अक्सर लोग समझते हैं आर्ट्स यानी पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग. ये गलत है. आर्ट्स का मतलब है ह्यूमैनिटीज, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस. All this is humanities and arts. So we come to the first question. After 10th, should I be studying in the science stream? Should I do the commerce stream? Or should I do the art stream? This is the most important question for students to answer. लेकिन अक्सर ये होता है that students are more worried about कौन से कॉलेज में जाना है, कहाँ पे अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स होते हैं, कहाँ पे हम जाके मौज मस्ती कर सकते हैं, हमारा कॉलेज कौन से थिएटर के पास है या कौन से मॉल के पास है. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. Unfortunately, students look at college as मस्ती, टाइम पास. वो अक्सर समझते हैं कि कॉलेज में जाना यानी पूरा फुल मस्ती करना है. It may be true for some students who are not interested in studies. But let me tell you, 11th and 12th standard is most important. क्योंकि 11th और 12th के स्कोर पे हैं आपके आगे के एडमिशन्स. जब आप 12वीं में रहोगे तो आपको एंट्रेंस एग्जाम लिखना होगा. इन एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद आपको इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, आर्किटेक्चर, सीए सब कोर्सेज में एडमिशन मिल सकती है अगर आपका 12th स्टैंडर्ड का स्कोर अच्छा हो और आपकी परफॉर्मेंस एंट्रेंस एग्जाम्स में अच्छे करें. So I repeat, though college is seen as a fun activity, college is the foundation for the remaining part of your lives. I don't know how many of you have even thought
में कितने साल की पढ़ाई होती है? In fact, the answer to that question is college is a minimum of 7 years of study and can go up to 10 years. अब ये न कहना कि मैं स्कूल में 12 साल पढ़ चुका हूं और पढ़ना जरूरी है क्या? College is a journey of another 7 years minimum. Why I say minimum is it depends on the duration of the course that you're studying. So my dear boys and girls and young children present here, आगे चलकर कॉलेज में 7 साल की पढ़ाई करनी है। मैं मानता हूं अगर आप अपने कोर्स ढंग से चुन ले तो ये पढ़ाई आप आराम से कर पाएंगे। ये पढ़ाई करते हुए आप खुशी महसूस करेंगे और इसी के साथ आपकी करियर भी बन सकती है। Any course that you take up which you enjoy studying, I'm sure you will do well, and therefore you will be able to build up a good career for yourself in that area. I was mentioning to you that after 10th, you need to decide whether to move in the science stream, commerce stream, or the arts stream. Arts is also called humanities. Now, as young boys and girls, sometimes you may not have an answer to this question. And therefore, one of the ways to find an answer to this question is to think about what have you dreamt for yourself in your career. आपके मन में क्या इच्छा है कि आप आगे चलकर बन सके? आपको जिंदगी में अपने लिए क्या हासिल करना है? आप इंजीनियर बनना चाहते हो या फिर साइंटिस्ट? आपकी इंटरेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में है या लॉयर? या फिर आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो या फिर आर्टिस्ट? Depending on what your dreams are for yourself, you can start deciding what should be the steps for your career. Now, here is where I'd like you to note down very carefully what I'm saying. आगे चलकर अगर आपको इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट, आपको इन 4 प्रोफेशंस में अगर दिलचस्पी हो, if you would like to become a doctor, engineer, architect, or a scientist, then you must study science in 11th and 12th. So very simple way of deciding. If you want these 4 professions, take up science. If you do not wish to do these professions, then you can consider professions in the commerce area. The most common ones are CA, Chartered Accountant, CMA, Cost and Management Accountant, CS, Company Secretary, lawyer, that is the LLB as they call it. अगर आप कॉमर्स क्षेत्र में पढ़ना चाहें तो आपके मन में ये इच्छा होना है कि आप आगे चलकर CA कर लो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, या CMA करो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, CS कर लो, कंपनी सेक्रेटरी, या फिर लॉ की पढ़ाई करें. These are 4 good professions which are in great demand, which you can take up, provided you decide on the same and you move on the route of studying commerce in 11th and 12th. For some reason, if you feel that you are not interested in doing science, you're not interested in doing commerce, then that brings you to the option of humanities. लोग अक्सर चिंतित हो जाते हैं, ह्यूमैनिटीज करने के बाद मेरी करियर क्या होगी? I must tell you some of the best careers out of humanities are study of psychology, economics. You can build up a career in design. You can build up a career in hotel management and catering. You can also build up a career in fashion. All these require speciality with humanities. Isn't it very funny if you tell me that I want to study science, but I would like to do hotel management? होटल मैनेजमेंट के लिए साइंस जरूरी नहीं है. सो जैसा मैं कह रहा था, आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं उसका विचार करें, एंड बेस्ड ऑन दैट you choose that stream in which you would like to specialize, be it science, commerce, arts. I gave you some examples for arts also. Arts and humanities are the same. These examples include doing psychology,
economics, also getting into design, hotel management, fashion, or you could become an IAS officer, the Indian Administrative Services. So boys and girls, keep this at the back of your mind. My stream in 11th and 12th should depend upon what I'd like to do in life. And here is where I want to tell you, please discuss this first with your family after understanding what your interests are. Then you may choose to discuss it with your teachers. But don't get into this trap. I will discuss with my friends, I will discuss with my neighbors. आप जितना डिस्कस करोगे उतना कंफ्यूज हो जाओगे. इसका कारण ये है कि हर आदमी के अपने विचार होते हैं और हर व्यक्ति ये समझता है कि उसके विचार ही सही हैं. So please don't get into a situation of discussing your career with everybody, like you discuss a cricket match, or today everybody is discussing the pandemic, thinking that they are an expert. What is important is discuss with your parents, discuss with your teachers if required, and उसके बाद केवल इतना करें, अगर कोई तकलीफ हो, अगर कोई परेशानी हो, then please reach out to a career counselor. हमारे साथ आकर डिस्कस कीजिएगा. But don't discuss with somebody who's not an expert, because I repeat, they may end up confusing you. Also remember, don't be carried away by what your friends are doing, what your relatives did, what your neighbors are doing. अक्सर लोग ये कहते रहते हैं कि भाई आज के तारीख में ना डेटा फेमस है, चलो डेटा साइंस करते हैं. But that's not the answer to your career solving problems. How do you know whether you like data science? Are you good at mathematics and statistics? Don't follow the mob. हर वो चीज जो लोग करें या लोग कहें सही नहीं होगा. Every one of you is unique. Every one of you is special. Every one of you has some talents. So choose your career carefully. Don't get into influenced by what everybody is doing around you. Think about your desires, your career options, decide which course to do, enroll for that, and go ahead. If you need support, I repeat, please reach out to somebody like us who could be a career counselor. So I just repeated for you, अगर आप साइंस क्षेत्र में जाएं तो आपको बनना है डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट. If you would like to go into the commerce stream, you would look at CA, CMA, CS, or law. If you get into the humanities or arts, you would look at psychology, economics, becoming an IAS officer, or getting into areas like design, hotel management, fashion, etc. So this is the broad summary of the career options which are available to you if you are looking at science, commerce, and humanities. A career which has become very, very popular in the field of humanities in the last 10 years or so is mass communication, mass media, advertising, etc. हम भी जानते हैं आजकल इंटरनेट में जाओ, व्हाट्सएप में जाओ, इंस्टाग्राम में हो, या भले आप कहीं पे भी ऑनलाइन रहो, एडवर्टाइजमेंट्स की बारिश हम पे गिरती है. There are so many ways that media is trying to grab our attention, whether it be television or even it be an Ola Uber where you see advertisements of products. एडवर्टाइजिंग क्षेत्र में, मास कम्युनिकेशन क्षेत्र में बहुत सारी नौकरियां आए हैं. इस वजह से काफ़ी नए कोर्सेस भी आए हैं. उस ज़माने में अगर किसी को इंटरेस्ट था मास कम्युनिकेशन में, हम उनसे कहते थे कि आप इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई करो, उसके बाद आप मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में चले जाओ. लेकिन आज की तारीख में आपको बैचलर्स इन मास मीडिया ये कोर्स मिलेगी. एंड दिस इज पर्टिकुलरली फॉर दोज पीपल who would like to get into careers related to mass communication. So I hope you understood by now that depending on your interest, you could look at science stream, commerce stream, or art stream. Arts is also called humanities. Decide on which stream to take based on your interest areas. If you have some confusion in your mind, talk to your parents, talk to your teachers, or reach out to a career counselor. Do not get into a situation where you discuss your career with everybody in and around here and there.
I can notice some of you are putting questions in the chat box. Very good. As and when you have questions, please put them in the chat box. After I speaking for another 15 minutes, after I complete what I want to say, I will tackle all your questions. The next thing that we need to remember now is, having decided which stream you want to take up, the next choice is which is the college I should be going to. मैं ये मानता हूं कि ऐसे कॉलेज चुनें जो घर से काफी दूर नहीं हो, so that you don't waste time traveling. Choose a good college so that you will have enough time for academics, extracurricular, co-curricular. Please remember, you're not going to college only to study subjects. You're going to college to develop your own personality. You're going to college to develop your own manners, etiquette, communication, confidence, and so on. So please remember, choose a college which covers good curricular, co-curricular, and extracurricular. Co-curricular means participation in quizzes, debates, competitions, inter-college events, seminars, conferences. Extracurricular means sports, music and dance festivals, drama, painting competitions. That is called the dimension of extracurricular. So choose a college which is not very far, which can give you exposure to all these three areas. That is the best way for you to build up your career as far as your college goes. Please remember, the college is a journey. After you complete 2 years of your 11th and 12th, you will be getting into writing entrance examinations. These entrance examinations for you will get you admission into any of the courses that we are talking about. It could be medicine, it could be engineering, it could be any of the other streams like architecture, design, which we spoke about. Please remember, nobody is going to give you admission based only on your 12th performance. You need to be given admission also based on your performance in the entrance test. Here is where, young children, please note down the entrance exams about which you need to know in case you wish to pursue a career in a certain stream or a certain specialization. The entrance exam for engineering is called JEE, Joint Entrance Examination. The entrance exam for medicine is called NEET. NEET. Now do remember, the NEET entrance examination is one where you can not only get admission into the medical program, but you can also get admission into programs like pharmacy. So if you want to get into becoming a doctor or you want to become a pharmacist, which means जो दवाई की दुकान है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो डिपार्टमेंट हैं जहां से पेशेंट्स को दवाई दी जाती हैं, उसके लिए आपको लिखना है नीट एंट्रेंस एग्जाम, NEET. अगर आप आर्किटेक्चर क्षेत्र में जाना चाहो तो उसका एंट्रेंस एग्जाम है नाटा, NATA, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर. इसके अलावा अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहो तो एंट्रेंस एग्जाम तो है ही आपकी JEE एंट्रेंस एग्जाम, लेकिन इसके लिए आपको साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेनी है. One of the best in the country is IISER, and one branch is at Pune, IISER, Indian Institute of Science, Education and Research, which is at Pune. As you noticed, if you want to get into any of these different courses, you have different entrance examinations to write. Engineering is JEE, medical is NEET, architecture is NATA, and IISER is the place where you can go ahead and enroll if you would like to become a scientist. अगर आप इन क्षेत्र में इंटरेस्टेड नहीं हो और अगर आपको कॉमर्स क्षेत्र में जाना है, then the entrance exams for CA are different. For CA, you will first go through a process called CPT, Common Proficiency Test, and then
move on into looking at different other dimensions, you will have an intermediate CA examination. उसके बाद आपको आर्टिकलशिप भी करनी होगी, कंप्यूटर ट्रेनिंग लेना होगा, and in the meantime, if you have completed your inter, you will go to the final CA. कॉमर्स क्षेत्र में सबसे टफ एग्जाम CA है, क्योंकि इसकी सिलेबस फिक्स नहीं है और काफी टफ एग्जाम होता है. अक्सर हम मजाक में समझते हैं कि CA आप एक राउंड में कंप्लीट ही नहीं कर सकते, आपको 2-3 अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा. बहुत बहुत ऐसे कम बच्चे हैं जो एक अटेम्प्ट पे CA खत्म करें. तो मजाक में हम कहते हैं CA मीन्स कम अगेन टू राइट एग्जाम्स. CA का असली मतलब तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, बट CA इज अ वेरी टफ एग्जाम. मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये जरूरी है कि आप सच्चाई समझें. यू आर ऑल यंग बॉयज एंड गर्ल्स who are over 15 years of age. Some of you are above 18. It's time you understand the ground realities of what happens in college and how you should work hard to develop your career by cracking the entrance examination so that you can get into a good institution of your choice. With that background, we now move on to humanities. For admissions into psychology, economics, most of the colleges look at your 12th standard performance. But admission into mass media, design, fashion, any of these courses, hotel management, might need an entrance test to be written. So please look out for these entrance tests. मैं मानता हूं आप समझ रहे होंगे, अगर इतने सारे एंट्रेंस टेस्ट है अलग, आप सब एंट्रेंस टेस्ट लिखते रहे तो थक जाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं रहेगी. सो इससे अच्छी बात यह रहेगी कि मैं तय कर लूं कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है और कम से कम एंट्रेंस एग्जाम लिखूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन एंट्रेंस एग्जाम की मैं प्रिपरेशन और तैयारी कर सकूं. सो टिल नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट कॉलेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जर्नी. आपको साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज किस क्षेत्र में जाना है वो तय कर लें. उसके बाद आपको याद रखना है 12th के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम्स लिखने होंगे. आज की तारीख में पैंडेमिक की वजह से काफ़ी एग्जाम्स ऑनलाइन हो चुके हैं, काफ़ी जगह पर आपको ऑनलाइन सबमिशंस, प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट्स कर रहे हैं. शायद एंट्रेंस एग्जाम्स इस साल भी ऐसा ही होगा. कहने का मतलब है कि चलते चलते शायद हम बहुत डिजिटल एंड फिजिकल मीन्स यूज़ करेंगे. कुछ क्लासेस ऑनलाइन होंगे, कुछ क्लासेस कॉलेज में होंगे. ये पूरा एक साल का प्रोसेस है, अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है. आई नो मेनी ऑफ यू हैड हर्ड ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जहाँ पे पूरी एग्जामिनेशन सिस्टम जो आज के तारीख में 10+2+2 10+2+3+2 उसको चेंज करने की डिस्कशन हो रही है. मैं मानता हूँ और एक साल तो लगेगा पूरा ये इम्प्लीमेंट होने में कम से कम. तो इस साल की जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो इसी ओल्ड सिस्टम में एडमिशन लेंगे और उनकी ट्रांसफर न्यू सिस्टम में जब होगा तब होगा. सो टुडे यू वरी अबाउट द सिचुएशन दैट इज द करंट सिचुएशन. जो आज की तारीख में एडमिशन प्रोसेसेस हैं, आपको उन्हीं प्रोसेसेस के द्वारा आगे चल के आपकी एडमिशंस कंप्लीट करनी है. The last thing that I'd like to tell you before I pause and try to answer some of the questions that are there in the chat box. First, as you enter college, please focus on developing your personality. Personality development means developing your communication skills, developing your listening skills, developing your confidence, learning how to interact with people. शायद यहाँ काफ़ी बच्चे हैं जो गर्ल्स स्कूल में पढ़ रहे थे या फिर बॉयज स्कूल में पढ़ रहे थे. कॉलेज में को एजुकेशन होता है. Even learning how to interact with boys and girls in a proper, dignified manner is also a great learning. Focus on developing your personality. अपना आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर बनो. Be confident. 4 लोगों के साथ पेश आते हुए अच्छी तरह से पेश आना. अपनी जो विचार है मन में वो बेझिझक उनको बताना. अगर लोग कुछ कह रहे हैं तो शांतिपूर्वक उसको सुनना. All these constitutes to developing your overall personality. Personality development में एक चीज और जरूरी है, is developing your knowledge of English. जिस तरह से मैं हिंदी और इंग्लिश बोल पाता हूँ,
आपको हिंदी इंग्लिश बोलना ज़रूरी है। अगर आप मराठी मीडियम के स्टूडेंट हो, ठीक है, आगे चल के कॉलेज में इंग्लिश मीडियम ही होगा। आप भले 2 साल और लोकल लैंग्वेज में पढ़ लें, ग्रेजुएशन में आपको इंग्लिश माध्यम में ही पढ़ना है। और याद रखिएगा, ये पढ़ाई वगैरह हम क्यों करते हैं? वी वांट to get to a corporate job. We want to get into an office. The language that we speak in the office is English. So आप ये ना समझना कि मैं फिरंगियों की तरह बात कर रहा हूँ. But English is the language that is used at work. Develop your English. आप भले हिंदी मराठी बैकग्राउंड से हो, कोई तकलीफ नहीं. आप चाहे तो इंग्लिश पढ़ सकते हो, इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो, और ये सारे आप घर बैठ के कर सकते हो. और आज इंटरनेट में आपको इतनी सुविधा है ऑनलाइन कोचिंग की, आप आराम से उसकी जानकारी पा सकते हो. यू कैन डेव्हलप युअर इंग्लिश. हे काय कठीण नाही आहे. थोडं प्रयत्न केलं तुम्ही आणि हे इंटरनेट रिसोर्सेस आता घरी बसून तुमच्याकडे आहे. थोडा वेळ काढा, दिवसात 1 तास काढून इंग्लिशची पढ़ाई मी करणार आहे असं ठरवून घ्या. आणि एकदा ठरवलं, इंटरनेटमधून प्रत्येक पुष्कळ वेबसाईट्स आहेत, तिकडे जाऊन तुम्हाला माहिती मिळेल. हे एक मनात ठरवलं ना तर नक्की होईल. प्लीज डू नॉट से दैट आई एम फ्रॉम मराठी बैकग्राउंड सो माय इंग्लिश इज नॉट गुड. ये न कहना कि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ रहा था इसलिए मैं इंग्लिश में बोलने से शर्माता हूं. आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आपकी शर्म, आपकी डर चली जाएगी. Practice makes perfect. So please develop your language, which is spoken English, is very, very important. I know some of you are little senior students who are here. I want to give you this little advice that after you complete your graduation, do not take a break. Complete your post graduation, then start working. Some people give me this ज्ञान that bachelor's के बाद 2 साल पढ़ेंगे, फिर मास्टर्स करेंगे. मैं मानता हूं कि बैचलर्स के बाद मास्टर्स फिनिश करो, उसके बाद नौकरी करना शुरू करो. अक्सर ये होता है कि हम नौकरी पे लग जाएं, फिर पढ़ाई से दिल छूट जाती है. हम कमाने लगे तो हम समझते अरे अभी तो कमाना शुरू कर दिया, नौकरी मिल गई, पढ़ाई की क्या ज़रूरत है. ये सब गलत बातें हैं. प्लीज़ कंप्लीट योर मास्टर्स along with your complete education cycle. After you finish your bachelor's, फिर पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए. If you complete this 10 plus 2, which is 12, plus 3, which is graduation, and plus 2, which is masters, which is the minimum of 7 years, which I told you, you have completed your formal education. हाँ, अगर आप साइकोलॉजी करना चाहो 3 साल की कोर्स है, इंजीनियरिंग 4 साल की कोर्स है, आर्किटेक्चर 5 साल की कोर्स है. ये सारे कोर्स ड्यूरेशन डिपेंड्स एंटायरली ऑन द कोर्स विच यू वांट टू स्टडी. इसकी जानकारी आपको वेबसाइट्स में मिलेंगे. जो भी मैंने एंट्रेंस एग्जाम्स के नाम बताए हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी अबाउट दीज कोर्सेज. जब आप किसी कॉलेज के वेबसाइट में जाओ, आप अक्सर कॉलेज में सुविधाएं देखते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देखते हैं, कैंपस अच्छा है कि नहीं देखते हैं. मैं मानता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू सी इज उस कॉलेज की सिलेबस क्या है. अगर आप बीए साइकोलॉजी पढ़ोगे तो क्या क्या विषय पढ़ोगे. अगर आप बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज पढ़ोगे, बीएमएस, तो उसमें क्या क्या स्पेशलाइजेशंस है. अगर आप बैचलर ऑफ मास मीडिया पढ़ोगे तो सिलेबस देखो कौन कौन से विषय में आप पढ़ाई करोगे. व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टू लुक एट द सिलेबस. इसलिए हम कहते हैं आप वेबसाइट में जाओ, पूरी जानकारी आपको वेबसाइट में मिलेगी. उसके बावजूद अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप करियर काउंसलर से मिलें, हमें बाद में आप कांटेक्ट कर सकते हो. लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो अगर आपने ये सिलेबस छानबीन कर ली, आपके मन में एकदम कोई शक नहीं कि मुझे यही कोर्स करना है आगे चल के, तो आप करियर काउंसलर के पास न जाएं. मजाक में कहते हैं कभी कभी हमारे पास अगर कोई कंफ्यूजन नहीं हो और अगर हम करियर काउंसलर के पास जाएं तो लौटने के बाद शायद हम कंफ्यूज हो जाते हैं. कहने का मतलब ये है, अगर आपका डिसीजन हो चुका है, इफ यू आर क्लियर दैट यू वुड लाइक टू बिकम अ साइंटिस्ट,
If you're clear you want to do hotel management, wonderful. Go ahead and progress in that direction. I want to spend a little time on these new courses which have become very popular. जैसा हम कह रहे थे, डिजाइन, अगर आप बैचलर्स इन डिजाइन करना चाहो तो उसकी सबसे फेमस इंस्टीट्यूट अहमदाबाद में है, उसे कहते हैं एनआईडी अहमदाबाद। महाराष्ट्र में एक बहुत प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है एमआईटी पुणे, एमआईटी एडीटी, एमआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, पुणे में है। इनके पास भी काफ़ी डिज़ाइन के कोर्सेस हैं। ये एनिमेशन हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, प्रोडक्ट डिज़ाइन हो सकती है, टेक्सटाइल डिज़ाइन हो सकता है, ऑटोमोबाइल डिज़ाइन, अनेक तरह के डिज़ाइन कोर्सेज आपको मिलेंगे ये दोनों संस्थाओं में। इसके अलावा मुंबई में काफ़ी ऐसे डिज़ाइन स्कूल्स हैं जिनमें आप ट्राई कर सकते हो, जैसे रहेजा, बांद्रा, आईटीएम है, अंधेरी में है, नेरुल में है। इसके अलावा अगर आप पूना में चाहो तो सिम्बायोसिस में जा सकते हो। ऐसे काफ़ी ऑप्शंस हैं आपको डिज़ाइन के लिए। अगर आप फैशन में जाना चाहें तो खारगर में NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूशन है। इसकी जानकारी आपको वेबसाइट में भी मिलेगी। अगर आप चाहो तो यू कैन गो एंड विजिट देम इन खारगर आफ्टर द लॉकडाउन इज कंप्लीटली रिमूव्ड। What is important to remember is if you can decide the course, then you can decide the college. So if you want to do hotel management, the Dadar Catering College is the oldest in the country. उनकी separate entrance examination है। ये कॉलेज का नाम है दादर केटरिंग कॉलेज। इसके अलावा नेरुल में DY पाटिल है, नेरुल में ही ITM है, अंधेरी में ITM है। ऐसे तरह तरह के अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे आप होटल मैनेजमेंट पढ़ सकते हो। In the current situation, a lot of people feel that they would like to do hotel management, but they are pure vegetarians. They do not want to touch meat and non-vegetarian items. So you have institutions like ITM, which also have special batches for vegetarian students. So this is a new development which has come up in the last couple of years. And this is something I thought I must share with you because many of you may be interested in hotel management, but might come from backgrounds which are pure vegetarian. For those of you who want to do BMS, which is the Management Studies Bachelor's Program, or the BMM, which is the Mass Media Program, there are over 100 colleges in Mumbai University who offer this program to you. The website of Mumbai University is mu.ac.in. I repeat, mu.ac.in. BMS यानी मैनेजमेंट और BMM मास मीडिया, इसकी सारी जानकारी आपको इस वेबसाइट पे मिलेगी। Lastly, in the field of law, which I discussed in commerce, even art students or humanities students can do it, provided they are able to clear an entrance exam called CLAT, C-L-A-T, Common Law Admission Test, Common Law Aptitude Test. The very interesting thing about CLAT is, if you are able to clear CLAT, you can join a 5-year integrated course in law. 5-year, BCom LLB in 5 years. Normally BCom plus LLB used to be 6 years, now it is 5 years. Similarly, BA LLB is 5 years, not 6 years. So look at this option as something which you can consider in case you would like to build up your career related to the law field. I shared with you certain entrance exams even in the humanities field because I wanted you to be aware that humanities as a field has become very, very famous, has become very much in demand. हमारे ज़माने में कहते थे कि अच्छे मार्क्स पाओ तो साइंस में जाओ, कम मार्क्स पाओ थोड़ा तो कॉमर्स में तो मिल ही जाएगा, दोनों में नहीं मिल रहा है यार तो तुम एकदम निकम्मे हो, आर्ट्स करो। ऐसे कहते थे जब हम स्टूडेंट्स थे 35 साल पहले। अब तो ज़माना एकदम बदल गया है। Getting an art seat is more difficult than getting a science seat in some colleges. So don't worry about लोग क्या कहेंगे, don't worry about बाजू वाले के बेटी क्या कर रही है। हमें सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हमको किस विषय में दिलचस्पी है और मुझे
किस क्षेत्र में अपना करियर मजबूत बनाना है. Remember, once you complete your college, you're going to be working for the next 30 to 35 years. And therefore, if you end up studying what you don't like, you're not going to enjoy your career. और अक्सर मैं भी घबराता हूं, अगर आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते हो और आपके इस घर वालों ने जिद की कि आप डॉक्टर बनो, मैं मानता हूं आप डॉक्टरी के पेशे में आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे. फिर मैं ऐसे डॉक्टर के पास जाने से डरूंगा, सच कहता हूं. If a doctor is not motivated, if a doctor is not specialized, if a doctor is not enthusiastic about what he's doing, then he will not be able to do justice to the patients. So, dear parents, don't force the students to take up any career they are not interested in. Don't tell them that they should choose based on your interest. Don't say हमारे घर में सब इंजीनियर हैं, तू एक अभी इंजीनियरिंग कर ले. The child may be interested in law, let he or she do it. Parents, please listen to the child. Give them a chance to explain to you what they are interested in. There is nothing like a good career or a bad career. It is doing any subject with great interest, therefore doing it well, excelling in it, and therefore establishing yourself well in the career. So many young boys and girls sitting in this Zoom meeting were not even born when I started working. But I have enjoyed working over the last 35 years because I chose an area which I was interested in, be it psychology, be it human behavior, be it working in the field of teaching, training, education. Choose your career with care. In our days, we did not have career counselors. We did not know whom to go and talk to for career guidance. But all of you are very lucky. You have information on websites. You can reach out to career counselors like me for advice. But please use these facilities. Do not say that मैं career counselor के पास क्यों जाऊं, मुझे पता है मुझे क्या करना है, हमने सब डिसाइड कर लिया है, हमारे बैच में सभी लोग सीए करेंगे. ये बैच वाली बात सब छोड़ दीजिएगा. Choose a career based on your interest, your aptitude, and what you would like to do for yourselves going ahead in life. So that is where I would like to take a break at this point in time. I want to repeat, develop your personality, look at how you can be more confident, and your English speaking skills are pretty good. And last but not the least, in today's world, you got to be digitally literate. You must know how to use the computer, the internet. You need to know how to use Google for studying, not Google for downloading music. Google has so much of learning materials. You need to use YouTube not for Mauj Masti alone, but again, for listening to so many lectures from people all over the world. And remember, it's available to you free. Therefore, focus on developing your digital literacy also. Of course, do remember, आज के तारीख में पैंडेमिक के बाद 15 साल में सबकी जिंदगियां बदल गई हैं. किसी के घर में काफी परेशानी हुई होगी, किसी के घरों में कोविड पेशेंट्स भी रहे होंगे. बट आई एम श्योर विथ गॉड्स ब्लेसिंग्स थिंग्स आर इम्प्रूविंग एवरीवेयर. दिस टू शैल पास एंड थिंग्स शैल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस. लेकिन एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा. In the light of all that has happened in the last 15 months, the world has changed. And I think one thing we have to learn as something which we must practice every day is compassion, is care, सहानुभूति. लोगों के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति हम थोड़ा तो सहानुभूति पेश करें. काफी लोगों को बहुत परेशानी हुई है. हम आज इस जूम मीटिंग में बैठे हैं, ऐसे हम डिस्कस कर पा रहे हैं. This itself is a great blessing for us. Anybody who needs help, please don't hesitate. In whatever minimum manner you can, please reach out to people and help them. Don't say that 25 साल के बाद मैं जब कमाने लगूंगा मैं समाज सेवा करूंगा या समाज सेवा करूंगी. आज करो. मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अपने जो भी पैसे हैं समाज सेवा में बांट दो. पैसा केवल एक ही मार्ग है. Can you spend some time, effort
energy? Can you help out some child who needs some help in mathematics? If you have 5 extra books, can you donate it to a child who didn't have it? Please remember, learn to be socially responsible. Learn to ensure that whatever you have, you are able to share with people who don't have this. We are indeed blessed, and every day we must try to count our blessings. हर दिन हमें शुक्रिया अदा करना है उस ऊपर वाले का कि हम इस अच्छे से हालत में हैं, क्योंकि हमसे बुरी हालत में बहुत सारे लोग हैं. सो जिस हद तक हो सके हम अपनी तरफ से इनके लिए कुछ ना कुछ कर सकें. I know I'm supposed to be talking about career planning, but I think one of the most important things in life is not only developing your career, but becoming a good human being. So thank you very much for listening to me. मैं सभी सवालों का जवाब दूंगा. आप चिंतित मत होइएगा कि आपके सवाल ऊपर हैं. एक ही सवाल 4 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है. चैट बॉक्स में से हम सवाल देखेंगे और सभी सवालों का हम जवाब देंगे. I'd like to request किरण राणे, जो हमारे प्रगति फाउंडेशन के प्रमुख हैं, if you will please read out the questions from the chat box, then it will be easy for me and I will be able to answer the questions one after the other. So Kiran, I look forward to you putting across the questions to me. Thank you very much. Yes, sir. There is a question about hotel management, sir. होटल मैनेजमेंट कोर्स, as I just told you, after 12th standard 4 साल का कोर्स है. बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी. मुंबई में दादर केटरिंग कॉलेज तो काफ़ी फेमस है. इसके अलावा बांद्रा में रहेजा कॉलेज, ITM नेरुल, DY पाटिल नेरुल, कुछ संस्थाओं के नाम मैंने आपको बताए हैं. ऑल्सो द ताज ग्रुप हैज़ अ होटल मैनेजमेंट स्कूल इन औरंगाबाद. The Oberoi Group has a hotel management school in Delhi. Now, whoever asked this question about hotel management, please remember there are 2 elements of hotel management. One is managing the hotel experience, right from reception, banquets, housekeeping, cleanliness, common areas, swimming pool, gymnasium, sports area. ये सब की देखरेख करना होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में आता है. The other important area in hotel management is called restaurant management. इसकी एक अलग विषय है. इसको कहते हैं बैचलर्स इन culinary sciences और बैचलर्स इन केटरिंग टेक्नोलॉजी. तो आप मास्टर शेफ के प्रोग्राम देख रहे हो. इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ केटरिंग, कुकिंग, बेकरी, कॉन्फेक्शनरी, तो आपको करना है बैचलर्स इन केटरिंग टेक्नोलॉजी. बट इफ यू वांट टू लुक एट द entire hotel management area, then you do bachelor's in hotel management and catering technology. The courses could be 3 to 4 years after 12th standard. Some of these colleges have entrance examinations. I want to repeat, जिन जिन संस्थाओं के नाम मैंने बताएं, इस वजह से बताएं कि please go and see the website, understand the course content and the syllabus, and then progress further. After you complete your course, you can get jobs in 5-star hotels. Now you can get them in holiday resorts. You can get them in luxury cruises. You can get them in various vacation spots all over the world. It's a very attractive career, but also needs a lot of hard work. मैं अक्सर कहता हूं किसी को होटल मैनेजमेंट करना है, सबसे पहले ट्रेनिंग घर में शुरू करो. अपने घर में आप बर्तन कभी मांजे हो? आपने कभी प्लेट्स एक जगह से दूसरे जगह साफ करके रखे हैं? Have you ever tried to fold your bed sheet yourself and keep it in place? If you study hotel management, you will end up doing all this. फर्क सिर्फ इतना है, घर में आपको पैसे नहीं मिलेंगे, अपना ही घर है. नौकरी पे आपको यही सब काम करने के लिए पैसे मिलेंगे. So please start your training at home under your parents if you wish to take up careers in hotel management and catering technology. The simplest thing you can do still, because of partial lockdown, is try to experience cutting vegetables and fruits, just as an example. Back to you, Kiran, for the next question. सर, क्या ITM में होटल मैनेजमेंट के एडमिशन शुरू हो चुके हैं और मुंबई में कहाँ-कहाँ पे ले सकते हैं?
Okay, ITM में hotel management admissions are available in Nerul as well as in ओशीवारा जो अंधेरी के पास है. एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुके हैं, जबकि हमने सुन लिया है कि 12th स्टैंडर्ड की एग्जामिनेशन अब नहीं होगी. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट्स व्हिच विल कम. लेकिन अगर आप कॉलेज में कांटेक्ट करो, दे विल गिव यू ऑल डिटेल्स अबाउट द कोर्स एंड द एडमिशन. वेबसाइट है itm.edu. I repeat, itm.edu. Next. Yes, sir. Next question is about the migration of board. Student is pass out from CBSE board and looking for state board. Is it possible? Yes, it is possible. From CBSE, you can come to state board. From ICSE, you can come to state board. The question is, why do you want to shift? That is a different question to answer. लेकिन मैं सच कहूँ, depending on your career, the entrance exam is more important than the board. आप भले CBSE करो, ICSE करो, SSE करो, you will ultimately have to write the same JEE, the same law exam or the same NATA exam. कुछ लोग कहते हैं कि CBSE करने से एंट्रेंस एग्जाम इजी हो जाती है. शायद CBSE का सिलेबस थोड़ा और डिटेल में है, लेकिन मैं मानता हूं एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो आप जरूर पढ़ाई करेंगे. सब तो वही एंट्रेंस एग्जाम लिख रहे हैं. बोर्ड माइग्रेशन में अगर आपको कॉलेज चेंज करना पड़े, नए वातावरण में जाना पड़े, आई डोंट नो हाउ इजी इट माइट बी और डिफिकल्ट. You might have to travel an extra distance. Again, something you need to debate about. So keeping all this in mind, unless you're changing residence, there is no real need to change board. All boards are the same because ultimately you have to write the same entrance examination. इसके बावजूद, if you still want more details, then you'll have to come for a separate individual career counseling along with your parents. You can get details of that from Pragati Foundation later on. Next question. Next question is from Navi Mumbai, sir. A student is interested in engineering field. वो पूछ रहा है इंजीनियरिंग के लिए नवी मुंबई एरिया में कौन से कॉलेजेस है. जिस हद तक हो सके मैं कॉलेजेस की बारे में चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि कॉलेजेस अच्छे हैं बुरे हैं ये सब लोगों के मन में है. लेकिन मैं आपको बताऊं आप कॉलेजेस कैसे चुन सकते हो. सबसे पहले इंजीनियरिंग के सबसे फेमस हैं IIT, उसके बाद है NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. उस जमाने में उसको REC कहते थे, तो पेरेंट्स को याद होगा REC, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज. आफ्टर दैट हाउ टू चूज इफ यू डोंट गेट बोथ दीज. मुझे महाराष्ट्र में चाहिए, मुझे नवी मुंबई में चाहिए. तो एक तरह चुनने का एक सिंपल आइडिया है, आप ये चेक करें कि कॉलेज कितने सालों से है. इज इट 2 years ओल्ड, इज इट 20 years ओल्ड. जितने साल कॉलेज रह चुकी है उसकी रेपुटेशन धीरे धीरे बढ़ जाती है. और आपको पता है रेपुटेशन कौन बढ़ाता है? उसके स्टूडेंट्स जो पास आउट हुए हैं. When you pass out of an engineering college, you join TCS, you join Wipro, you join L&T, you may join ISRO, you may join BARC, and one fine day, people will say, अरे DY पाटिल में जो पढ़ते हैं ना, उनको solid नौकरी मिलती है. For example, I named DY Patil because it is one of the oldest engineering colleges available in Navi Mumbai. SIS, many years, at least 20 years. So please remember, don't choose a college by advertisements, by discounts, by publicity. Choose a college by the number of years it has been there. Where are the students working? How many faculty do they have? Do they have good facilities? कॉलेज चुनने से पहले पेरेंट्स के साथ go and visit the college. Nothing wrong. The college will allow you to see the facilities. So don't ask me to say कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज बुरा है. मैं मानता हूँ काफ़ी हद तक कॉलेजेस अच्छे हैं, और मैं ये भी मानता हूँ अगर कोई कॉलेज अच्छा नहीं है तो उसके कारण है उसके स्टूडेंट्स ही हैं. So please get into a college which is a college which has been there for some time, established itself, and then perform well.
so that you get a good job, and with your performance and reputation, the college gets a better reputation. Next question, please. Yeah, thank you, sir. I hope, Pratik, you got your answer. There is a question from Sampada about MPSC and UPSC examination. She has completed her 12th standard, and now she would like to do something for UPSC and MPSC examination. So what to do? बड़ा बड़ा अच्छा विचार है, उम्दा विचार है. वेरी हैप्पी कि आप स्टेट सर्विस या फिर नेशनल सर्विस में जाना चाहते हो. The first thing that you need to do after 12th, I would recommend to you, is please move on to humanities stream. Because in the UPSC entrance exam, some of the compulsory subjects are psychology, philosophy, economics, sociology, like these. There is some content from all these areas in the UPSC prelim exam, which is compulsory. So if you move on to these areas, you can start studying right from the bachelor's level. After you complete your graduation, that is your BA, with any of these subjects, then enroll for a master's in one of these subjects which you like. After bachelor's, also apply for UPSC. All the details are available at the UPSC website, upsc.gov.in. I repeat, upsc.gov.in. And then you can move on into completing the prelims. Final exam में आप subjects चुन सकते हो. So if you have studied some of these subjects which I told you for the prelims and you have liked them, choose one among them and do your masters in the same, and also get into your civil service final exam with the same subjects. After which you will be called for the final interview of civil services, where you would be selected based on your performance for Indian Administrative Service, Indian Revenue Service, Indian Forest Service, Indian Forests, Foreign Service, and the list goes on. What I want to highlight to you is UPSC is a very tough exam because, again, like CA, syllabus भरपूर है. आप शायद पढ़ते रहो, फिर भी 4 सवाल ऐसे आएंगे जिसका जवाब आपको नहीं पता है. And therefore, we always say do your masters. That is why I told you simultaneously do it. बैचलर्स के बाद यूपीएससी कंप्लीट करने में करीब 2 साल लग जाते हैं. अगर आप अच्छी मेहनत करो, God bless you, you are able to get into civil services, very good. But if you are not able to get through civil services, then you at least have completed your MA, and therefore finding a job is much, much more easier. And therefore, I'd like to repeat, UPSC is a wonderful career that is at the national level. Here, if you want to work at the state level, then you will have to look at MPSC, which is the other option. So that's the suggestion in terms of how you should pursue it. Next question. Next question is from Hasti Gala, sir. She is interested in CA, but she is worried about the result. So she is confused. She asking you, should I go ahead with CA or should I choose another one? If you are hardworking, if you are determined, if you are sincere, then you should be able to pass CA. Tell me, more important is to ask you this question. Whenever we go to write an exam, do we plan to fail or do we plan to succeed? We plan to succeed, isn't it? Of Yes. course. We never plan to fail. So same advice to this young lady. इतना मत डरो कि एग्जाम लिखने की हिम्मत ही नहीं हो. इतना मत परेशान होना कि आप एग्जाम में जाकर आपके हाथ पैर हिलने लगे. Study hard, be confident. Effort is in your control. Result is not in your control. I repeat, effort is in your control. मेहनत आपके हाथ में है. खूब मेहनत करो, एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे. शायद सीए भी पास कर जाओ. फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुई तो दूसरी, दूसरे में नहीं हुई तो तीसरी. Many people attempt CA more than once, and that's what I told you for fun. We often say CA means come again. So don't worry about the result, worry about your hard work. And if you're not able to inspire yourself to work hard,
If you are not able to say कि मैं मेहनत करूंगी, then nobody can help you. No amount of coaching, no amount of tuition, no amount of guides will help you. सबसे पहले अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ, and I'm sure you will succeed whichever career you want to get into. Next. Next question is from Mr. Sagar Joshi. What are the some good colleges for BMS? So, Mr. Sagar Joshi, I just told you before that I do not want to name which is a good college, which is a bad college, but I want to only say choose colleges which have been around for 20 years plus. This is the first suggestion. St. Xavier's, Jai Hind, HR, Podar, Ruya, SIS, Somaya. I can go on giving you names. Choose such colleges because they have been around. They have helped students build up their lives over 20 years, 30 years, 40 years, 50 years. I'm not saying कि आपके बगल में एक 2 साल पहले कॉलेज स्टार्ट हुआ तो वो अच्छा नहीं है. मैं नहीं जानता हूं तो मैं नहीं कहूंगा. मेरा काम ये नहीं कि मैं कॉलेज के बारे में रिपोर्ट लिखूं और न्यूज़पेपर में छाप दूं. ये मेरा काम नहीं है. I advise children on how to choose the career, and that's what I've been doing for the last 35 years. देख रहे हो ना, मेरे दाढ़ी के बाल पक गए हैं 35 साल करियर काउंसलिंग करते करते. और मैं खुश हूं इस वजह से कि मैं स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को समझा सकूं कि स्टूडेंट की इंटरेस्ट क्या है एंड हाउ शुड ही चूज द रूट. आपको दिल्ली जाना है, आप भले ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, आप पैदल चले जाओ या फिर अपनी गाड़ी में. दैट चॉइस इज दैट ऑफ योर फैमिली. आपको बीएमएस करना है, आई विल गाइड यू टू डू बीएमएस, बट वेदर यू वांट टू डू इट इन Xavier's, पोद्दार, रुया, SIS is your choice. It's your family decision. It's a decision based on your performance as to which college is likely to take you. एक चीज जरूर याद रखना, जैसा आप कॉलेज चुनते हो, कॉलेज भी आपको चुनती है. हम नाराज हो जाते हैं ना, अरे ये कॉलेज देख साला, उन्होंने क्या किया मालूम, उनका कट ऑफ बहुत हाई है. अरे आप अगर कॉलेज चुन सकते हो तो कॉलेज आपको क्यों नहीं चुन सकती है? नथिंग रॉन्ग. सो यू डू योर बेस्ट, you excel in what you do, then the college will welcome you. You don't have to chase the college. But if you are taking life very easy, playing video games, always busy with all kinds of activities which are not related to studies, hooked on to all kinds of Netflix and video channels, then I think your priorities in life are long. I also play video games. I also use Netflix. I have an Instagram account. I am active on social media, but all that is secondary for me. Primary is entirely focusing on career. And that's what every person in this room needs to do. So don't worry about best colleges, worry about good college and worry about your best performance in a good college. Next. Next question is from Jia Shah. She's inquiring about the lateral entry, sir. She's asking you, do we have to give an entrance exam after doing diploma? I suppose she's talking about engineering. Usually after diploma into degree, there is no entrance exam required unless you have incomplete diploma. If you have done the 3-year diploma after 12th, then you can get admission into the second year of the engineering college directly. But yes, if the number of applications are plenty, some college में से आपको entrance exam लिखना होगा. हमारे पास 10 सीट हैं लेकिन 50 application है, then they might give you an examination. Solution is very simple. Do well in your diploma, score well, your concepts are clear. Even if there is an exam, you can easily clear it. Next. Next question is from Clifford. He just cleared his 12th commerce and have an interest in computer software. So what to do? All right. So after 12th commerce, you have courses in Mumbai University called BSc IT and BSc Computer Science. Don't worry, BSc का मतलब doesn't worry you. Even a 12th commerce student can apply. So repeat, BSc IT, BSc Computer Science, और एक third option है BCA, Bachelor of Computer Applications. You can choose one course among these three. All of them are available in Mumbai University, Pune University, and all other
nearby universities. After that, you need to do your master's. The master's course is called MCA. MCA was a 3-year course. Now it has become a 2-year course. So 3 plus 2, 5 years, complete your MCA. In the meantime, you will realize whether your interest is in software development, whether it is in networking, whether it is in the field of IT enabled services, whether it is something to do with the entire concept of how machines can work and communicate with each other. So decide your area of interest, do your bachelor's, then do your master's, and you would be comfortable in your career. Next. Next question is from Aditi Patil. She is interested in medical field. What are the good colleges for doctor? I think we have already mentioned this in passing. So I'm going to give the same answer. The oldest colleges may be the Sion Hospital, the KEM Hospital, the JJ Hospital, the NIA. All these are the oldest medical colleges in Bombay. They're some of the best. So you have to ensure you get a good performance in the NEET score so that you can apply to these colleges. Next. Next question is from Jainam Shah. He is a SSC pass out student and he don't want to continue 11th and 12th, but he is interested in computer field. So what to do? Jainam, it's like this. हमारे एजुकेशन सिस्टम में आपको 11th 12th करना पड़ेगा, उसके बाद बैचलर्स की पढ़ना ज़रूरी है, देन यू कैन डू मास्टर्स. इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आज की तारीख में. 2 साल में अगर नए एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाए and if they give you some other solution, then let us wait and watch. My advice to many of you is you are in the 2 years of transition of the new education policy. 22 tak, I expect the new education policy to be rolled out in some form or the other at the entry level. So this year, don't fight the system. Don't say मैं 2 साल wait करके NEP आने के बाद पढ़ाई करूंगा. You're wasting 2 years. Join 11th and 12th. If you are not fond of certain subjects, drop it. Take subjects which you like. Study mathematics. That is very important in the field of computer science. And slowly after 12th, go into all those computer courses which I just answered for a friend of yours who had asked this question. 11th, 12th, zaruri hai. There is no choice. It is not negotiable. It's like saying आप विदेश जाना चाहो तो सबसे पहले पासपोर्ट चाहिए, फिर वीजा. ये 11th और 12th आपका पासपोर्ट है, इसके बिना आप करियर में आगे नहीं जा सकते हो. Next. Next question is from Parth Dongre. He is interested in mathematics and statistics. So what are the fields available for him? This is a very interesting area which few people are interested in. After studying mathematics and statistics, there are some very prestigious institutions in the country. The Chennai Mathematical Institute in Chennai, the Indian Statistical Institute in Calcutta and Bangalore, and the Indian Institute of Science Education Research in Pune. You can study mathematics and statistics as subjects in bachelor's and master's, right up to master's, and get up a good career for yourself. After this, you can work in the field of mathematics. One could become an author. One could become a mathematical researcher. One could become a teacher. Or one can work in this hot area today called data analytics and data sciences, the base for which is mathematics and statistics. So it's a great career option. Don't worry कि मेरे साथ जुड़े हुए सभी लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, आर्किटेक्चर कर रहे हैं. करने दो. आपकी इंटरेस्ट मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स में हो तो go ahead and focus on that and build up your career and become famous as a scientist one day. Next. Next question is from Pranav Bagul. वो जानना चाहता है IAS की एग्जाम के बारे में. प्रणव, मैं अभी सब बता चुका हूं, शायद आप लेट आए होंगे. IAS एग्जाम्स के लिए आप ह्यूमैनिटीज क्षेत्र में जाएं, उसके बाद बैचलर्स कंप्लीट करें, मास्टर्स में एनरोल कर लीजिए और बैचलर्स होने के बाद आप UPSC एंट्रेंस एग्जाम लिख सकते हो, जिसकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में इंग्लिश, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस
ऐसे विषय हैं। ये अगर आप क्लियर करो तो आप फाइनल एग्जाम में जाओगे जहां पे आप विषय चुन सकते हो। उसके बाद फाइनल इंटरव्यू होगा। सारी जानकारी upsc.gov.in इस वेबसाइट में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट। उसके बाद शायद रिपीट क्वेश्चन है हस्तीगाला से, जेईई एग्जाम कंपलसरी है क्या, वो पूछ रही है इंजीनियरिंग फील्ड में, जो आप ऑलरेडी बता चुके हैं सर। मैं एक चीज ऐड करूंगा, जेईई एग्जाम आज के तारीख में कंपलसरी है फॉर आईआईटी एनआईटी। थोड़े प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो अपनी खुद के एंट्रेंस एग्जाम भी लेते हैं, और थोड़े ऐसे कॉलेजेस हैं जो जीआरई एग्जाम भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इनकी संख्या इतनी कम है तो मैं मानता हूं जेईई लिख लीजिए। अगर आपको मेंस पास हो गए तो हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट। या उससे ही कनेक्टेड क्वेश्चन है जिया शाह का, वी शुड डू इंजीनियरिंग आफ्टर डूइंग डिप्लोमा और आफ्टर डूइंग 11th एंड 12th? I would believe it is safer to do engineering after 11th and 12th, because in the 2 years that you're doing 11th and 12th, suppose you lose interest in engineering, you can still do commerce, you can do arts, you can do design, you can do so many other options like architecture, fashion, hotel management. But if you do diploma for 3 years and halfway through you lose interest, you cannot migrate anywhere. डिप्लोमा से सिर्फ इंजीनियरिंग में शिफ्ट हो सकते हैं, तो फिर आपको दोबारा 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेना पड़ेगा। इसमें आपका कीमती वक्त वेस्ट हो जाएगा। सो आई वुड नॉट recommend anybody to do diploma unless they are, one, very sure they want to do engineering, and second, they have such bad scores कि कोई भी कॉलेज में साइंस एडमिशन नहीं मिल रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थियोरी नहीं पढ़ पाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल्स उनकी बहुत अच्छी है। ऐसे बच्चे डिप्लोमा करके डिग्री में ज्वाइन हो जाते हैं थ्रू लैटरल एंट्री। बट इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट गेटिंग अ फर्स्ट क्लास, you are able to score about 60% plus throughout, I would still think better to do 11th and 12th and then engineering. It keeps your options open. Next. नेक्स्ट क्वेश्चन सर नाशिक से है, शी इज कंफ्यूज। मैं लेकिन मुझे लगता है कि आज के वेबिनार के बाद थोड़ा बहुत कंफ्यूजन दूर हुआ रहेगा उनका। उन्होंने पूछा है, कोई ये कहता है ये करियर करो, कोई वो कहता है वो करियर करे, तो समझ में नहीं आता है क्या करे करके, लेकिन उनको आज के वेबिनार में इसका जवाब मिला रहेगा। और भी वो पर्सनल काउंसलिंग करना चाहते हैं तो अपना ईमेल आईडी यहाँ पे छोड़ दे, ऐसा मेरा मानना है। यस सर। ओके, तो मैं ईमेल आईडी दे देता हूँ बाद में चैट बॉक्स में। यस। मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ यही कि किसी की नहीं सुनो, करियर चॉइसेस में दिल की सुनो, उसके बाद फैमिली की सुनो, और आप दोनों मिलके अगर डिसाइड नहीं कर पाए तो काउंसलर की सुनो। जब तक आप ये फॉर्मूला अपने लिए नहीं अपनाएंगे आपके मन में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। अक्सर ऐसे हो जाता है कि लोग करियर की डिस्कशन ऐसा करते हैं, जैसा मैंने कहा था कि भाई कोई रेस्टोरेंट में जाओ और मेनू कार्ड देखो, इतने सारे आइटम हैं तो कंफ्यूजन तो होना ही है। एंड अक्सर ये भी होता है, हम ये भी देखते हैं एक रेस्टोरेंट में कि व्हाट इज द अदर पर्सन हैविंग, so that I get an idea of what might be good over here. Don't try all this with your career. Going to a restaurant is a fun activity. Your career is the most important activity of your life. So give it the due importance, because I repeat, the next 30 years of your life are going to depend on your career choices today. Next. Next question is from Ashwini. This is regarding visual media and designing courses, especially for learning disability children. एडमिशन प्रोसेस क्या होती है जो लर्निंग डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए कुछ खास अरेंजमेंट होती है क्या विजुअल मीडिया और डिजाइनिंग कोर्सेज में? Sure. So visual disability, I don't know what disability she's talking about. She only said disability, right, Kiran? Yeah, learning disabilities. Okay, learning disability. So learning disability, one of the things I'm sure you've done is you've got a learning disability certificate or a slow learner certificate. That is very, very important. जो मैंने डिजाइन के कॉलेजेस बताए या मास मीडिया के कॉलेजेस बताए हैं, all of them have some special benefit given to students with some disability. So please see the website, understand it,
submit your disability certificate when you apply, and then you will get some concession in applying to those colleges. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी. Don't worry if you have a disability. Just say that we will overcome, हम होंगे कामयाब, and fight it out. Facilities will be available, but the most important thing is you need to have that confidence, that courage. आत्मविश्वास जरूरी है. Go ahead, do your best, and I'm sure this disability will not come in your way anywhere. I've always believed that if God has given somebody some disability, He has also given them some special ability. Find out what that special ability is for yourself. It could be painting, it could be sketching, it could be singing, it could be anything like that. So don't lose your confidence. Go to the websites, have your certificate, apply, you'll get the concessions, and I'm very confident you'll do well in whatever career you choose. Next. He is also concerned about this kind of students, whether they are successful in their career and how to get jobs actually. तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर हिम्मत है, हौसला है, अच्छे परफॉर्म करो तो कोई चिंता नहीं, अपने आप नौकरियां मिल जाएंगी. Please remember, in all the vocational colleges, be it hotel management, fashion, design, engineering, there is a campus placement. यानी आपकी कॉलेज कंपनीज के साथ जुड़ी हुई है और पहले से ही वो कंपनी वाले आके स्टूडेंट्स को चुनते हैं अपनी कंपनी में काम करने के लिए. सो वंस यू एंटर कॉलेज, ऑल यू नीड इज गुड परफॉर्मेंस. एवरीथिंग विल हैपन automatically. There is nothing to worry. Yeah. Next. Yes, sir. Next question is from Sarthak Narkar. He is interested in CA course. Just उसने 10 pass out किया हुआ है. So what to do? 11th and 12th with commerce, BCom, FY, SY, TY. 12th होते ही BCom ज्वाइन करने से पहले CA की तैयारी करो, CPT लिखो, then move on to intermediate and continue that journey. 11th and 12th with commerce is your immediate task. In 12th, do well so that you get into a good commerce college who can teach you enough, because so many of the BCom subjects are part of the CA syllabus. So if you study BCom well, half your battle for CA is already won. Next. Next question is from Mr. Suyog. He is from Borivali and he is interested in BSc Agriculture. So what to do? All right, this is a wonderful field again in India, except that those who have been in agriculture, वो अपने जो घर में उनका एग्रीकल्चरल फैमिली से हैं, ऐसे ही कंटिन्यू होता गया है. बट BSc Agriculture is another very, very good area to be in. You have some good agriculture colleges in Pune. You also have a University of Agricultural Sciences in Pune. It goes by the name of Vaikunth Mehta. Also related to agriculture is dairy, rural poultry, etc. काफी अच्छे संस्थाएं हैं आनंद में. I'm sure everybody knows about Amul story at Anand. They have some very good institutions in this area, including IRMA, IRMA. So please continue this area if you're interested. I guess you have a family interest in agriculture. It is good to do a professional course and go back to your family business. Do 11th and 12th with science and then join any agricultural sciences college after 12th, after you succeed in the entrance exams. Pune is the nearest place where you will find good colleges. Next. Next question एक parent से है. वो जानना चाहते हैं 12 बोर्ड एग्जाम के बाद क्या IIT और NIT कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं? JEE एंट्रेंस एग्जाम पास करो तो दोनों में एडमिशन मिलने की संभावना है. IIT में ज्वाइन करने के लिए JEE मेन पास होने के बाद JEE एडवांस्ड लिखना भी जरूरी है. So there are 2 entrance exams that the student has to clear if he wants to join an IIT after 12th. So better thing to do is during 11th and 12th, enroll into some coaching class. Why I'm asking for a coaching class is they give lots of practice papers. घर में खुद हम इतना practice नहीं कर पाएंगे.
इसके अलावा उनकी फैकल्टी हमको पढ़ाते हैं कि भाई अच्छा मार्क कैसे स्कोर करें, उसके जो अच्छे टिप्स हैं, अच्छे ट्रिक्स हैं, वो बताएंगे. So along with college, a coaching class will help performance because they are focused in helping you how to score better. Next. I see a question here about merchant navy. Again, 12th science ke baad, please focus on the entrance exams related to merchant navy. There are many merchant navy training institutions available in Maharashtra and Mumbai. Please just Google for merchant navy and INS. Good old days, we used to call it Indian Navy Service, and INS, and then type in the name of merchant navy. So good old days, we had INS Kautilya, INS Hamla, and there are many such in Mumbai. Main locations are Nerul and Malad. Both of them are on the seashores, which is obvious because these are merchant navy institutions. Depending on which course you do, it is a 3 to 4 year course. What is important in merchant navy is you first should not have sea sickness, क्योंकि आपको 3 से 6 महीने समुद्र में ही रहना पड़ेगा. हाँ, जहाज में रहेंगे, बहुत बड़ी जहाज में रहेंगे, जहाज की हाइट 6 माले की रहेगी, बहुत सारी जगह रहेगी, बट समुद्र के बीच में रहेंगे. There is no concept of getting onto land for 3 to 6 months at a time, minimum, sometimes 9 months. So you first should not have seasickness. Second, you should be ready to stay away from home for very long periods. And third, you should be able to do a lot of your own work yourself. Because in fields like armed forces, merchant navy, or any of these such areas, you do a lot of your own work yourself. You can't have what they call a luxurious life. ऐशो आराम की जिंदगी चाहो तो शायद ये मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि काफी इनिशियल स्टेजेस में खुद का काम आपको करना पड़ता है. बट यस, wonderful career. You can go all over the world. You can see new places, and it's a very exciting journey. The Indian Navy or the armed forces, or as this child was asking, the entire concept of merchant navy. Merchant navy ships transport all items which are used by you and me. It could be computers from one country to another. It could be food items. It could be mobile phones. And aaj ke tarikh mein you're reading, they are even transporting vaccinations across nearby countries and nations. So merchant navy is a good career. Route is 12 science, then entrance exams. Next question. Sir, which colleges are there in Mumbai for BSc Agriculture? This is a question from Mr. Suyog. Okay, so your best of my knowledge, there is no agricultural college in Mumbai, but you can send an email to me. I have put my email address. I will check it once more, and if I come across, I will let you know. Boys and girls who asked for my email address, I have just dropped my email address there. You can reach me if you need personal counseling or if you have any questions like this. If you need counseling, your parents must approach me, because we don't do any counseling in the absence of the parents. जैसे मैंने कहा था, ये फैमिली की डिसीजन है, तो जाहिर है माँ, पिताजी और आप मिलके हमारे साथ ये डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट. Next question is from Miss Ankita Ambore. She is looking for the beautician courses. Ask her what she has studied till now. Let her put it in the chat box. And Beautician courses after 12th. I would recommend that at least graduation तक पढ़ाई करो. 12वीं पास से कुछ नहीं होता है. आप आर्ट्स की पढ़ाई करो, भले आप चाहो तो पार्ट टाइम पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई करो. ग्रेजुएशन जरूरी है. ब्यूटिशियन कोर्सेज आपको बहुत मिलेंगे ऑल ओवर. आप अपने ही इलाके में देखोगे तो 3 महीने 6 महीने के कोर्सेज बहुत मिलते हैं. लैक्मे ब्यूटी सैलून हो या ऐसे जो ब्यूटी पार्लर्स हैं, वो भी कोर्सेज चलाते हैं. 3 महीने का कोर्स है, वहीं पर ट्रेनिंग देते हैं, वहीं पे आपको नौकरी मिलते हैं. बट these are jobs which are not very paying. You have to better have
a proper graduation degree. You may even choose areas related to fashion if you want, but do a bachelor's degree, because after 12th, doing a small 3-month course into beautician is not going to help you stabilize in your career. 10 साल बाद आपको लगेगा कि मैंने बैचलर्स की पढ़ाई करनी थी, लेकिन तब शायद बहुत ही देर हो चुका होगा. So please do the beautician course, work as a beautician part-time if you want, but please do your graduation in any preferred area that you would like to. Next. That's all, sir. Okay, I have just one question which had come up before, which I'd like to spend just a few minutes on once again, and that is migrating from boards. See, board migration ki jo rules and regulations hain, that you will have to check up with the respective boards. ये हर साल चेंज होता रहता है, मैं यहाँ बैठ के नहीं बता पाऊंगा. कभी कभी migration from ICSE to CBSE, they ask for an entrance test. From CBSE to IGCSE, they ask for a proficiency test. Central to state board में कहते हैं आप हमारा एग्जाम लिखो फिर देखेंगे. है तो है, there's nothing to worry about it. अगर आप अपने बोर्ड में अच्छा पढ़ चुके हो, you are doing well in your exams, you have performed well, you are a sincere student, भले एक एग्जाम और लिखने से क्या होता है. So don't bother yourself कि entrance test लिखना है इसलिए मैं बोर्ड नहीं चेंज करूंगा. There are no shortcuts to success. Please focus on what is the correct route to take after you decide what is your correct career choice. I've given you a lot of ideas on how you should steadily, slowly decide. But I want to repeat this one thing. इंटरनेट पे गूगल चाचा है, प्रोफेसर गूगल है, गूगल आंटी है, अनेक नाम से हम उनको पुकारते हैं. You have used Google so much in life for fun. Now please use it for studies. Please use it to collect information. Please use it to find out more information about what are your interest areas. And then you will realize that a lot of information is readily available, and you are then able to take very conscious career choices based on your interest, based on your aptitude, and based on the fact that you will enjoy studying what you want to do. And if you enjoy what you're studying, I can assure you, you'll also enjoy your work life. Otherwise, it might happen that you became an engineer and you didn't like it. तो आप कैसे काम करेंगे, किस ढंग की इंजीनियरिंग करेंगे, सोचकर ही मुझे डर लगता है. And I'm saying this very seriously, though I'm saying it with a smile, that don't break up a career you're not interested in because you will not perform well. So if there is a migration exam from one board to another, do it. Also ask this question, should I migrate? Is it needed? I've already discussed this point before, because yes, if 2 साल की बात है, after which anyway you're going to migrate into a professional course in an engineering college or an architecture or a law or a CA, as the case might be. Do remember, career is something very important. Career is something very personal. हर व्यक्ति का career अपना career है. Don't compare. And parents, I repeat, don't worry about how many more marks your neighbor's children have got. It's not important. What is important is encourage your child to do well, support your child. Ensure that they get the best of facilities that you can give them to study. Celebrate whatever they have got. कुछ घरों में ऐसा होता है कि मुझे 96 मिला, लेकिन शोक सभा का आयोजन किया गया क्योंकि मेरे बगल वाले स्टूडेंट को 96.5 मिला. भाई 96 को सेलिब्रेट करो, 0.5 को गोली मारो. Because if you have done well to that extent, you can always do better with hard work, with enthusiasm, with God's grace, and take one step at a time in a positive approach. Don't keep worrying about others' performances. Worry about the child's performance. Encourage the child to do well. Research along with the child so that we can decide the ideal area. And of course, इसके बावजूद आपको doubts हो, reach across to counselors, do a career guidance session, do an aptitude test if required. But that's professional help.
ये नहीं कि आप बिल्डिंग के सोसाइटी मीटिंग में डिस्कस करो कि मेरे बच्चे को क्या पढ़ना है, या शाम को गार्डन में चलते वक्त 4 लोगों से ये डिस्कशन करो. It doesn't work like that. It leads to more confusion and chaos. Look it up as a professional process. Encourage the child, and I'm sure your child will succeed well with your blessings and the blessings of the Almighty. On that note, I hand back to Kiran. I think we've done our best to answer all the questions. We started Yeah. on time, and always good to end on time. It's a very, very healthy habit. Develop this good habit of punctuality too. Back to you, Kiran. Thank you. Yes, sir. Thank you very much, sir. I hope you have found the right guidance in today's webinar. Thank you all. You all participated in the today's webinar and learned the options after 10th and 12th. Good luck to all of you for your bright future. Many thanks to Professor R.S.S. Pani, sir. He guided the students and parents very well. He has given us an option from traditional education like arts, commerce, and science to paramedical science, hotel management, IT, mass media, engineering, and many more. Thank you so much for resolving so many doubts. See you again in the next webinar. Thank you. Namaskar.